Good morning. Let us start with today's session. So let us take one more problem and question is what is the optimum strategy in the game described by the matrix? And first which method you will apply? Principle of dominance. Yes, देखो किसी ने बोला saddle point. Yes, you are also correct. You can go for saddle point method also. But now as we are learning the concept of principle of dominance, now you do with principle of dominance. In exam you are free to do any method. Okay. But now as we are in the flow of dominance method, let us go by dominance method. Okay, so go by dominance method and tell me whether it has been reduced to 2 by 2 or 1 by 1. Okay, so I have given you the hint how to proceed further. You have to make the total row wise and column wise. So row wise total is 9, 13, 10 and 12. So what I will compare, I will compare highest with lowest. So 13 with 9. So 3 and 3 both are equal. ठीक है, चलेगा. 2 and 4. Okay, 2 and 4. 2 is less. Okay, but here 4 is coming greater, तो possible नहीं है. Okay, compare other two rows. 10 और 9 sorry 13 और 9 से नहीं हो रहा है. Go for 12 and 9. Go for 12 and 9. So 0 and 3 highest. 4 and 2 not possible. Okay, go for 13 and 12. 12 and 13 नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. Compare this two, this and this. Yes, it is possible. Compare these two rows. देखो 3 and 4. 3 and 4 में 3 छोटा है. ठीक है. 2 and 2 both are equal, no issues. 4 and 4 both are equal, no issues. 0 and 0 both are equal, no issues. So here you can see that all the values of row 1, all the values of row 1 are either greater or equal to row 3. So which row will be cancelled out? First row will be cancelled out. Okay, now again check whether there is any other further dominance possible. I think now further is not possible. So total from column side 7, 10, 6 and 12. Now check which column is dominating. Come on, now you can do that. Which column is dominating? कौन सा column cut करूँ पहले? first column first and third compare करेंगे. Okay, first and third. Okay, let me compare first and third. So 3 is greater than 2. 4 and 4 are equal. 0 and 0 are equal. Okay, good. So 1 and 3 if I compare, what should I cancel? First column. First column will be cancelled because it is the maximum side. So this will be cancelled out. Okay, now again go for further column and row dominance. Which row or column I should cancel out? अब नहीं है सर possible. अब मेरा 3 by 3 तो आ गया, but can I apply formula method? Can I apply oddment method? No sir. नहीं है. मतलब मुझे anyhow उसको 2 by 2 में तो convert करना ही है. If I want to apply any of the method, I have to anyhow convert it into 2 by 2, without which I cannot proceed further. So there is one more concept here. There is one more concept, that is average dominance concept. अभी तक अपन क्या कर रहे थे? टोटल डोमिनेंस देख रहे थे. पूरी रो का अगर डोमिनेंस है तो उसको कैंसिल कर दो, और पूरे कॉलम का डोमिनेंस है तो उसको कैंसिल कर दो. नाउ विल गो फॉर एवरेज डोमिनेंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लेट मी एक्सप्लेन यू. Just take the average values of column 3 and column 4. Just for an example I am giving you. Just take this average. So here you can see the average for 2 and 4. The average for 2 and 4 is 3. So I am just writing here between these two rows or these two columns. 2 and 4 का average is 3. 4 and 0 का average will be 2. 0 and 8 का average will be 4. 0 and 8 का average will be 4. Now just compare column 2 with this average part. What can you tell? 4 is greater than 3, correct? 2 is equal to 2. 4 is equal to 4. So can I tell that column number 2 is dominating the average of column 3 and column 4? Yes or no? Yes sir. Yes. So if it is dominating, which column I should cancel? Column 2. Column 2 will be cancelled. तो देखो ये वाला column cancel हो गया. Okay, so for cancelling of this column, I have used the concept of average dominance. Okay. Now can you apply again? देखो अभी हमारे पास कॉलम तो 2 हो गए, अभी सिर्फ 3 रो बची जिसको मेरे को 2 में कन्वर्ट करना है. So can you apply regular method and see whether dominance is possible now? देखो चेक करो, डोमिनेंस पॉसिबल है अभी. प्योर डोमिनेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर डोमिनेंस. नहीं है. So again we will go by the concept of average dominance. See this. If I take the average of this two, 3 and 4, एवरेज देखो 3 और 4 का क्या आएगा? 2 और यहाँ पर आएगा 4.
4 और 0 का एवरेज 2 है, 0 और 8 का एवरेज 4 है। सर 3 और 4 का क्यों ले रहे हो? 2 3 का नहीं ले सकते? ले सकते ना, यू कैन ट्राई विद, यू हैव टू ट्राई विद वेरियस कॉम्बिनेशंस। ट्राई तो करना क्या करना पड़ेगा। है, 2 और 3 का भी एवरेज लेके देखना है। अगर उसका 4 से कंपेयर करोगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, अगर वैसा आ रहा हो तो। ओके। That depends on you which two columns you are taking the average. It is not fixed that you have to take only for this and this. तो आपको चेक करना है किसमें डोमिनेंस आ रहा है। ओके, तो देखो अभी मैंने एवरेज किसका लिया, 4 और 0 का लिया तो 2 आया, और 0 और 8 का लिया तो 4 आया। So 2 2 4 4 both are same. So I can cancel out this row because it will tell that it is dominating. तो अब आंसर क्या बच गया मेरे पास, देखो सिर्फ बचा 4 0 0 8। यस और नो? सर रो में तो जो डोमिनेंस रहती है उसको नहीं कट करते हैं ना। we are comparing that row with the average dominance. तो एवरेज में दो वैल्यूज इन्वॉल्व थी तो दोनों रो कैंसिल नहीं होगी, जो सिंगल अकेला है वो कैंसिल होगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या बचा, 4008 4008 एंड दैट आर द स्ट्रेटेजीज नंबर 3 and 4 बच गई, और यहाँ पर भी 3 and 4 बच गई, करेक्ट। 4 0 0 and 8 strategy for player A is 3 4, strategy for player B is also 3 4, and now as further reduction is not possible, I am going for augment method. So augment method में आएगा 4 plus 0 4, sorry 4 minus 0 4, 8 minus 0 will be 8. Here it will be 4 minus 0 4, 8 minus 0 8. Total number of games played are 12. So answer I will write P1 is equal to 8 by 12 because it is coming 8 times out of 12. Okay, then P2 1 minus 1 by 3, Q1 2 by 3, Q1 Q2 1 by 3. Value of the game will be 8 by 3. Now can anyone tell me how to write the strategies? Strategy कैसे लिखूं बताओ, ये important part है यहाँ पर। I want strategy for A. What should I write? 0 0 0 0 0 0 2 by 3 1 by 3. perfect आंसर। देखो क्यों ऐसे लिखना है आंसर, एक्चुअली प्लेयर ए के पास कितनी स्ट्रेटेजीज थी, टोटल स्ट्रेटेजीज वर 4। ठीक है, तो मेरे को 1 2 3 4 तो लिखना ही है, 1 2 3 4, आउट ऑफ विच वी हैव ऑलरेडी कैंसल्ड आउट 1 2, तो उसकी जगह पे 0 0 आ गया, और थर्ड और फोर्थ का अपन ने आंसर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। सो हियर यू कैन सी थर्ड के सामने मैं लिखूंगा P1, फोर्थ के सामने मैं लिखूंगा P2, हियर आई विल राइट Q1, हियर आई विल राइट Q2। एंड सिमिलरली कैन यू टेल मी आंसर फॉर स्ट्रेटेजी बी? 0 0 2 by 3 yes 1 2 तो कैंसिल हो गया है, तो 1 2 will be cancelled and then it will be 2 by 3 and 1 by 3. So this is how we write the answers in the dominance method.